We has been looking for a standard 11 economic NCERT, which name is Indian Economic Development. We are looking at Unit 3 and we reached at Unit 3, and in today's video we are going with current challenges facing the Indian economy, जो कि हमारा Unit 3 है. So what's Unit 4? Unit 4's name is human capital formation in India. So what we are studying in this chapter is the concept of human resource, that what is human resource, human capital formation, human development, what is the meaning of this term. यानी कि आगे देखेंगे कि इन सब के बीच में what are the linkages and what are the repercussions if we have something like this in a country. So economic growth, human development, so there are something which has linked together. देख रहे, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो अगर आप उन फैक्टर के सोचे जहाँ पर कि भाई एक ह्यूमंस है, उनका एवोल्यूशन हो रहा है, मैनकाइंड का एवोल्यूशन हो रहा है, वो कैसे एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं बाय द लेक्चर्स, बाय द एलोबरेटिंग द थिंग्स. सो ह्यूमन सून फाउंड दैट what are we need to good deal of a training and skills to do things efficiency in things को efficient बनाने के लिए what are the businesses of all kind. So efficiency, how we can borrow. So we know that the labor skill of an educated person is more than that of an uneducated people. So this is the fact, like the educated person has more skills, so the productivity will more, and the uneducated people is drew his business with the old ones, and they are not getting the new technology, so they have no knowledge. So the meaning of education is reflected here. After, so his and hers contribution to economic growth. So educated person है वो अपना growth बढ़ाएगा by the skills, by the another externalities. तो economy में उसकी जो ग्रोथ है, उसका शेयर है, उसका पोर्टफोलियो है, वो बढ़ेगा. एजुकेशन इज सोड नॉट ओनली एज अ कन्फर हायर अर्निंग कैपेसिटी. सो एजुकेशन इज नॉट लाइक कन्फर्स लाइक अ हायर कैपेसिटी, बट ऑल्सो इन लाइक हायर वैल्यूज बेनिफिट. व्हाट आर द वैल्यूज अ पर्सन हैज, व्हाट आर द मैनकाइंड person is like. So it gives on a better social standing and provide it enables ones to make a better choice in life. So if the person is educated, they have more choice compared with the uneducated person. So it provides the knowledge, understanding, changing the place in the society. So it also stimulates the innovation. If the person is educated, so it will go for innovation if he is interested in that particular area. Not only the science, only economy, on polity, on the every portion of knowledge, right? Moreover, the availability of education labor force facilitate adoption of new technology. So what is the production, how production will increase? So some kind of efficiency has to be there, technology has to be there. So economists have stressed that the need for expanding educational opportunity in the notion as it accelerates the development process. Okay, now we have a picture right here. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो फार्मर्स है, एक ये वाला बंदा है, एक ये वाला बंदा है. सो ये फार्मर्स है, वो प्रोडक्ट सिर्फ फार्मिंग नहीं कर रहा, वो फार्मिंग के साथ साथ अपने काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी थे अडोप्ट ऑल्सो. एंड सो दैट कि यहाँ पर ये बंदा है वो सोच रहा है, देखे विथ इक्वल साइज ऑफ लैंड हाउ इज दिस दैट हिज यील्ड इज़ मोर देन माइन. यानी कि आप यहाँ पर देखो, इसकी यील्ड है वो इतनी है, इसकी यील्ड है वो इतनी है. वाई? बिकॉज देखे सब इन दोनों के पास ना सेम अमाउंट ऑफ लैंड है, पर इन्होंने क्या किया है भाई, फिर ट्रैक्टर ले लिया है, कुछ फर्टिलाइजर्स डाले हैं, कुछ पेस्ट फर्टिलाइजर डाले हैं, तो इनका जो यील्ड है वो बढ़ा हुआ है, पर इनका नहीं बढ़ा हुआ क्योंकि भाई उनका फर्टिलाइजर्स नहीं थी, यानी कि जो देर लगी है उसके कारण क्या हुआ कि कीड़े पड़ गए, वो खा गए. सो दैट इज़ द थिंग. आगे देखते हैं. ये सो let me remind you that you have to like this video, subscribe this video, and for bell icon so that you can find a notification whenever we put videos. Okay, so now let us understand what is human capital. Okay, now let me create a box. Yes, what is human capital?
So just a country can turn physical resource like a land, physical capital like a factory. Similarity is can be also turned human resource like a nurse, farmers, teachers and students into a human capital like engineers and doctors. So meant that a country also have a physical kind of resource like factories हो गए, आपकी plants हो गए, आपके kind of buildings हो गए, आपकी offices हो गए, आपके so you're getting that. so ये तो हमारा physical resources हो गया, पर एक हमारा एक अलग भी resource होता है जिसको हम बोलते हैं human resource. what it confers or what it corporates, it's the nurses, farmers, teachers, students, the all are the human capital. Also engineers, doctors, maybe sometimes a type of sportsmen, they are also human capital. So society need a sufficient human capital in the first place. So we need the first best human capital for the base for our economy also, in the form of competent people who have themselves have educated and trained as a professionals and other professionals, professors and other professionals. In one word, we need good human capital to produce another good human capital. So this is the line where we have to focus. Like a good human can produce another human capital, good human capital. Like a professor can make an engineer. So a good human capital makes another human capitals. Vice versa also. Now let's look at here. This means that we need investment in human capital to produce more human capital out of human resources. As I said, okay. This is not that important. Now let us move to here. What is the source of human capital? So where can we find the human capital? What are the kind of institutions or something that we can elect the human capital, or we can formate the human capital? Okay, so like investments in education is considered one of the main resource of human capital. Like एजुकेशन पे आप खर्चा कर दो तो आपका ह्यूमन कैपिटल बन सकता है. यानी नॉर्मल सी बात है, अगर एजुकेशन मिलेगा तो आप उनको कई सारी ट्रिक्स दोगे, कई सारे उनकी जो माइंड है उसको डेवलप करोगे, तो उस तरह से एजुकेशन से ये ह्यूमन डेवलप होता है. यानी एजुकेशन से वो नर्स बनेगी, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ भी बनेगा. सो सॉर्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन से हम बना सकते हैं. बट देयर आर सेवरल अनदर सोर्स एज वेल, like investments in health, on a job training, migrations, informations are the another source of human capital. So we has to give investments in health. If we invest in health, so the good human capital can be formed, like a job training, migration, informations about the jobs, about the area which worker has to be work. Now, why do your parents spending money on education? भाई कभी तो सोचा है आपके एजुकेशन में आपके जो घर वाले हैं वो क्यों खर्चा कर रहे हैं? सोचा है? अगर सोचा है तो क्या सोचा है कमेंट में बताओ, ठीक है. Now, so education by individual is similar to the spending on capital goods by the companies, which objective of increasing future profits over the period of time. क्या बोला गया है कि एजुकेशन क्या है, यानी अगर देखिए कोई कंपनी का मालिक है, वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो उनके माइंड में एक थॉट है कि अगर मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो आराम से 5-6 महीने में मुझे प्रॉफिट मिलेगा. सो द एजुकेशन इज टाइप ऑफ दिस थिंग्स. लाइक इफ यू इन्वेस्ट इन एजुकेशन नाउ, so the repercussion will be it takes long time, but it is like a good repercussion. So good yield will be there. Okay, so the like education, health is also considered as an important input for a development of a nations as much as it is important for the development of individuals. Also health is one of the concern for the resource of capital. Who can work better, a silk person or a person with a sound health? So you are able to give the answer. Like obviously we give our answer like sound health वाला ही भाई अच्छा करेगा. So medical facility is completely to the absent from the work, and there is a loss of productivity. If any labor is a silk, so his productivity will be shrunk.
Also the labor force will be shrinks. So this type of things will be there. So hence the expenditure on the health is a important source of a human capital formation. So we need more expenditure on health. So first is education, second thing is investments in health. Like, okay, now let's move upon here. Like the amount of money spent on preventive medicines like vaccine. So what our government has had give us is during the COVID को मिला था कि भाई आपको एक वैक्सीन देनी, तो वैक्सीन वो कैसे दी गई? प्रिवेंटिव, यानी कि जब कोरोना हमारे अंदर आए उसके पहले वैक्सीन देते तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव. नाउ देयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिसिन इज अ क्यूरेटिव. क्यूरेटिव मीन्स जब आपके अंदर आ गया है, मान लो कोविड आपको लग गया है, तो आपको जो दवाई मिलेगी वो होती है क्यूरेटिव medicines. And the other is social medicine. Social medicine is nothing but a spread awareness of health literacy, right? So these three factors are a type of related to health. So after that also we want a clean drinking water, a good sanitation for the good health. What is the sanitation? कि भाई आपके घर आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर कितनी सफाई है, आप खेत में तो सोच करने नहीं जाते हो. So that's also our kind of sanitation things. So we need health expenditures, and or there should be a scenario where the household is not spending a lot of portfolio of his income. Okay, so health expenditure directly increased by the supply of healthy labor force, and thus the source of human capital formation. Like if we do the health expenditure more, so what will we get? Good and healthy labor force. So and this convert in the human capital formation. So this is the catalyst source. So the other things are on job training to the workers. This will take different forms, like on job training. This books has mentioned. So one, the workers may be trained in the first itself under the supervision of a skilled worker. सो कंपनी वाले क्या करते हैं, भी कोई वर्कर आया तो कोई सुपरविजन में स्टाफ रखा दिया और उनको बोला कि भाई आप इन नए वर्कर हैं, उनको काम सिखा दो. आफ्टर दैट वो उनको सैलरी वो स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम की जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग ये होती है. द सेकंड वन इज़ द वर्कर में सेंड फॉर द आउट कैंपस ट्रेनिंग. यानी कि अब जहाँ पर काम करना है वहाँ पर आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, आपको आउट कैंपस ट्रेनिंग दी जाती है. लाइक इंजीनियरिंग करते हो तो आपको आउट कैंपस ट्रेनिंग होती है, और जहाँ पर काम करना है वहाँ पर आपको रियल आपका जो आपने स्किल डेवलपमेंट किया है, जो आपके पास नॉलेज है, उनको आपको रिफ्लेक्ट करना है. सो दिस टू टाइप, यानी क्या कौन कौन से टू टाइप्स है ऑन जॉब ट्रेनिंग की? फर्स्ट कि कोई सुपरविजन में कोई बंदा रख लिया और वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है. द सेकेंड वन इज़ कि आपको जहाँ पर काम करना है वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आउट कैंपस ट्रेनिंग आपकी होती है. सो लाइक कॉलेजेस, तो इन कॉलेजेस वी हैव आउट कैंपस ट्रेनिंग, एंड in the companies we have type of supervisions, type of on job training. So in both cases the firm incurs some expenses. So firm will incur the many expenses a firm have to put. So the firm will thus insist that the worker should work a specific period of time. And अब आपने भाई अगर कंपनी आपको कुछ सिखा रही है, आपके ऊपर खर्च कर रही है, तो वो ये तो इंश्योर करेगी कि भाई आप कुछ इतने फिक्स टर्म के लिए वहाँ पर काम करेंगे, आप छोड़कर नहीं जाओगे. सो दिस इज़ द मोड ऑफ ऑपरेंडा. सो आफ्टर देयर ऑन द ऑन जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच इट कैन रिकवर अ बेनिफिट फ्रॉम एनहांस प्रोडक्टिविटी ओविंग टू द training. So after training the worker may get an productivity or enhanced productivity, so that the production will be a kind of exceed the normal level. After that, the expenditure regards on the on-job training is a source of human capital formation. So you can visualize that by the on-job training there is a form of human capital by which a person can get the skills for his livelihood. So this is the kind of things the NCERT says to us. After the migrates, what is the people migrates in the search for the jobs that fetch them higher salaries. So after migration,
यही होता है कि भाई आप एक ही जगह पर काम करोगे तो शायद आपको उतना इंक्रीमेंटल आपके सैलरीज में नहीं होगा, पर आफ्टर मिग्रेशन इट इज़ सिम्स दैट आपकी सैलरीज बढ़ती हैं। आगे देखते हैं। सो यहाँ पर फोटो आपको दिख नहीं रहा होगा। सो दिस इज़ द फोटो वेर, देखिए यहाँ पर एक बस है, बस में लोग माइग्रेट हो रहे हैं। सो ये बस है, वो देखिए यहाँ पर भी भरे हुए हैं लोग, अंदर भी भरे हुए हैं, 2-4 लटके हुए हैं। सो दिस इज द टाइप मिग्रेशन इज टेकिंग lots of emphasis. So after that, unemployment is the reason for the rural urban migration. So this is the type, like all of us are came from not all of us, the majority portion of urban population is derived from rural population. So what are the major why we need to migrate? So the first is unemployment. So there is no employment or less employment in the rural areas. So the people usually have tendency to migrate in a urban area. Okay. Now technically qualified persons like engineers, doctor migrates to the other country because of the higher salaries. So ये तो हमने देखा है कि भाई हमारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वो भागते हैं, साइंटिस्ट भी भागते हैं नासा में बिकॉज ऑफ द हायर सैलरीज, हायर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स. Now migration in the both this is involve the cost of transportation. So there is a cost of transportation. So after higher cost of living in the migrants place the psychic cost of living in the straight socio-cultural step. The enhanced earning in the new place outweigh the cost of migration. So the earning which are came from the migration and the incremental which are came from the migration will kind of erode the cost of मिग्रेशन. यानी कि आपका जो आने जाने में खर्चा लग रहा है वो अब मिग्रेशन के खर्चे, यानी कि मिग्रेशन में आपको मिग्रेशन आपने किया, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर गए, तो आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आपका जो इंक्रीमेंट हुआ उससे भी एक्सीड हो जाए. तो एक काइंड ऑफ बेनिफिशियरी प्रोसेस है मिग्रेशन. आफ्टर दैट the people spend on the acquire the information relating to the labor market and other markets like education, health. For example, people want to know the level of salaries associated with the various type of jobs, whether the education institution provide the right type of employable skills at the what cost, and what are the cost for that information. The information is necessary for make decision regarding to investments in a human capital as well as for the efficiency utilization of the acquired ह्यूमन कैपिटल स्टॉक. यानी कि क्या बोल रहा है कि भाई हमें मूल 4 चीज़ों पे फोकस करना है. आफ्टर मिग्रेशन देयर इज़ अ इंफॉर्मेशन, लाइक अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप कुछ बेटर जॉब के लिए ढूंढोगे. यानी कि आपके पास स्किल है पर आप ये ढूंढ रहे हो कि मुझे स्किल का ज़्यादा यील्ड कहाँ पर मिलेगा, तो कहाँ से आपको ये समझ में आएगा, आपको सपना तो आता नहीं है. सो द गवर्नमेंट यूज टू लाइक इम्प्लीमेंट सम पॉलिसी इन विच द इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड. So this type of things. Okay. After अब देखते हैं. Okay. The concept of physical capital is the base of conceptual human capital. There are some similarities between the two form of capital, like in physical also a human. There are some striking dissimilarity as well as like in 4.1.